Hello students, how are you all? Hope you all are fine at home. Students, myself Sangeeta Jain, representing Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we will start chapter 4 subtraction part 2 of class 3rd mathematics. Now students, we already discussed in the part 1 subtraction facts, subtraction of 4-digit numbers without borrowing, subtraction of 4-digit numbers with borrowing and checking subtraction. Now in this part we will discuss about estimating differences and word problems. Now we discuss about estimating difference. Estimate करना means क्या होता है? Round off करना. We already discussed in previous chapters how to round off the numbers. Now to estimate the difference, round off minor and subtrahend nearest 10, 100, 1000 which is given, and after that we subtract the estimated or round off numbers. Now find the difference between 6875 and 3256 using estimation to the nearest 100 and compare with the actual value. Means आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का, और फिर उसके बाद में आपको एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है और उनका डिफरेंस फाइंड करना है. नाउ फर्स्ट वी फाइंड एक्चुअल डिफरेंस. सो फर्स्ट we write bigger number, that is minor, and after that we write smaller number, that is subtrahend. 6875 and after that we write 3256. First we subtract both the numbers. 5 minus 6 is possible to subtract? No, we borrow from tens place. Tens place से borrow करोगे तो 1 10 is equal to 10 ones. तो यहाँ पर कितना रह जाएगा आपका 6, और यहाँ 10 ones plus 5 ones is equal to 15. Now 15 minus 6 is equal to 9. Now 6 minus 5, it is possible to subtract? Yes, because 6 is bigger and 5 is smaller. 6 minus 5 is equal to 1. Now we subtract hundreds of the numbers. 8 minus 2 is equals to 6. Now we subtract thousands of the numbers, that is 6 and 3. 6 minus 3 is equal to 3. Now we round off these two numbers nearest 100 place. अब 100 place को राउंड ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे? यू ऑब्जर्व टेंस ऑफ द नंबर्स. जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना होता है उसके ठीक राइट साइड वाला नंबर जो आपका यहाँ आपके पास में कौन सा है? टेंस है. तो टेंस को आप ऑब्जर्व करोगे. इफ़ इट इज़ बिगर देन 5 तो आपका जो 100 प्लेस है उसमें आप क्या करोगे? +1 करोगे, और जो आपका टेंस और वंस प्लेस है वो 0 हो जाएगा और लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स एज इट इज़ रहेंगे. तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ 7 है, 7 इज़ बिगर देन 5 तो आपका 100 प्लेस पर +1 करोगे आप, और यहाँ 0 हो जाएगा टेंस और वंस प्लेस. सो व्हाट इज़ द नंबर नाउ? 6900. यू गॉट इट दिस? आफ्टर दैट वी एस्टिमेट और राउंड ऑफ 3256. अगेन वी ऑब्जर्व टेंस ऑफ द नंबर. इट इज़ इक्वल्स टू 5. अब यहाँ 5 है तो आपका जो 100 प्लेस है वो क्या हो जाएगा? +1 होगा उसमें. तो 2 + 1 इक्वल टू 3. लेफ्ट साइड एज इट इज़ रहेगी और राइट साइड में टेंस और वंस प्लेस 0 हो जाएगा आपका. तो क्या हो जाएगा? 3300. व्हेन यू राउंडेड ऑफ 3256 नियरेस्ट 100. नाउ वी सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स. इन दोनों नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ 0 minus 0 is equal to 0. 0 minus 0 is equal to 0. Now we subtract hundreds. 9 minus 3 is equal to 6 and 6 minus 3 is equal to 3. You got it? This is the estimated difference. Now we round off this number. जो आपका actual difference find किया है, जब आपको round off करोगे, आप इसको round off करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो आप 10th प्लेस को ऑब्जर्व करोगे. इट इज़ 1 है यहाँ पर, तो आपका जो 100 प्लेस है उसमें ऐड नहीं होगा कुछ भी, और आपका वंस और 10th प्लेस क्या हो जाएगा? 0, और
हंड्रेड्स एज इट इज रहेगा, थाउजेंड्स एज इट इज रहेगा. इट बिकम्स 3600. इट मीन्स आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट. Now we take one example to understand this. Yes, now subtract 3742 from 6483 using estimation to the nearest 100. In this subtraction, first we subtract these two numbers, after that we round off nearest 100 and then we subtract again and we compare the values. Now first we arrange according to their place value. So we write first, this is actual subtraction. Actual difference. We write here actual difference. Now first we write ones, tens, hundreds and thousands, because these two numbers are 4-digit number. After that we arrange their according to their place values, and first we write minus 6483. After that we write subtrahend, that is 3742. Now we put minus sign and after that we write we perform subtraction. Now 3 minus 2 is equals to 1. 8 minus 4 is equals to 4. After that we subtract hundreds. We have 4 and 7. It is possible to subtract? No, it is not possible because 4 is smaller than 7. So we borrow from thousands of the numbers. Now we have 5 here. आप यहाँ से 1000 को बोरो करोगे इधर, it becomes 1000 is equal to 10 hundreds and 10 hundreds plus 400 is equal to 14 hundreds. Now 14 minus 7 is equal to 7 and 5 minus 3, it is again possible to subtract, so it is equals to 2. Now we round off these two numbers nearest 100. अब आपको nearest 100 round off करना है 6483 को. You observe tens of the numbers, it is 8, it is bigger than 5. तो आप 100 प्लेस पर क्या करेंगे, +1 करेंगे, so it becomes 5 और आपका जो tens और ones प्लेस है वो 0 हो जाएगा और thousands प्लेस एज इट इज रहेगा. तो आपने जब इसको राउंड ऑफ किया इस नंबर को तो क्या हो जाएगा 6500. यू गॉट इट दिस. और यहाँ पर क्या होगा 3742 है. तो you observe tens of the numbers. Now it is 4, it is smaller than 5. तो आपका 7 में कुछ भी प्लस नहीं होगा और यहाँ पर आपका टेंस और वंस प्लेस 0 हो जाएगा और थाउजेंड्स प्लेस एज इट इज रहेगा. तो अब जब आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, दिस इज एस्टिमेटेड डिफरेंस. फर्स्ट वी राइट वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. आपने इसको एस्टिमेट किया था तो क्या आया था यहाँ पर आपका 6500 और जब आपने इसको एस्टिमेट किया था तो क्या आया था 3700. This is subtrahend and this is minus. Now we subtract both the numbers. 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0, 5 minus 7, it is possible to subtract? No. We borrow from thousands, it becomes 5 or 1000 is equal to 10 hundreds, 10 hundreds plus 500 is equal to 15, 15 minus 7 is equal to 8 and 5 minus 3 is equals to 2. So 2800 is the estimated difference and actual difference is 2741. Now we start word problem. आपने subtraction तो
पढ़ा है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को हम अप्लाई कैसे करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो वी लर्न थ्रू वन एग्जाम्पल। इन अ स्कूल देयर आर 2975 स्टूडेंट्स। इफ 1682 are girls, how many boys are there? Now in this word problem आपके पास में क्या है कि टोटल स्टूडेंट्स पता है आपको कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2975 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से गर्ल्स कितनी है 1682। आपको क्या बताना है, बॉयज़ बताना है। एक स्मॉल नंबर्स हम लेकर के आपको पहले अपन समझते हैं इस चीज़ को कि सपोज आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स में से 12 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे आपके पास में। तो आप क्या करोगे, 20 में से 12 को माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे। सेम मैथड वी यूज हियर टू सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम। यू गॉट इट दिस। फर्स्ट वी राइट ऑलवेज बिगर नंबर दैट इज माइनर। सो यहाँ पर भी आपके पास में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, यहाँ पर 2975 एंड girls are 1682. So first write we total students, after that we write number of girls. Now we subtract both the numbers. Again we start from the rightmost of the numbers, that is ones. We have 5 and 2 at ones place. So 5 minus 2 is equal to 3. Now we have 7 here. 7 minus 8, is it possible to subtract? No, because 7 is smaller and 8 is bigger. So we borrow from hundreds place. We have 9 here. So 100 is equals to 10 tens. So 10 tens plus 7 tens is equal to 17 and it becomes 8. आपने यहाँ से 100 को बोरो किया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 8 and it becomes 17. 17 minus 8 is equals to 9. Now 8 minus 6 is possible to subtract. So 8 minus 6 is equal to 2 and 2 minus 1 is equals to 1. Now how many number of boys are there? 1293 are boys in a school. So there are 1293 boys in the school. Now we take one more word problem. Yes. Now we discuss one more word problem. A shopkeeper had 8,500 kilogram of rice. He sold 6,550 kilogram. How much rice is he left with? Students, first when you solve word problem, you read very carefully. After that, you will decide कि इसमें आपको subtraction करना है या क्या करना है। तो आपने यहाँ पर जब भी आपके पास में word problem में left आता है, it means आपको क्या करना है, subtract करना है। Now a shopkeeper had 8,500 kilogram of rice. Shopkeeper के पास में 8,500 किलोग्राम राइस है। He sold 6,550 किलोग्राम। सोल्ड मीन्स क्या होता है, बेचना। तो उसने कितने बेच दिए, 6,550 किलोग्राम राइस सेल कर दिए। नाउ हाउ मच राइस ही लेफ्ट विथ हिम, उसके पास में कितने राइस बचे हैं। तो आप क्या करो, कितना बचा है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। नाउ वी राइट स्मॉल स्टेटमेंट्स व्हेन यू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। यू गॉट इट दिस। नाउ फर्स्ट वी राइट टोटल राइस। कितने राइस है शॉपकीपर के पास में, टोटल 8,500 किलोग्राम। आफ्टर दैट राइस सोल्ड कितना है यहाँ पर, 6,550 किलोग्राम राइस। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फर्स्ट यू राइट बिगर नंबर ऑलवेज इन सब्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट वी राइट दिस, आफ्टर दैट सोल्ड राइस इज 6,550 किलोग्राम। यू गॉट इट दिस। आफ्टर दैट राइस लेफ्ट विथ शॉपकीपर। शॉपकीपर के पास में कितने राइस बचे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ माइनस करोगे। फर्स्ट यू अरेंज दीज नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज। Means below ones place you write ones, below tens place you write tens, below hundreds you write hundreds, below thousands you write thousands. After that you subtract. Now 0 minus 0 is equal to 0.
Now 0 minus 5, is it possible to subtract? No, it is not possible. Again we borrow from its neighbor. It becomes 4 and it becomes 10. I already discussed in the previous examples. Now 10 minus 5 is equals to 5. Now 4 minus 5 is possible to subtract? No. So we borrow from its neighbor. It becomes 7 and it becomes 14. Because 1000 is equal to 10 hundreds and 10 plus 400 is equals to 14 hundreds. Now 14 minus 5 is equals to 9 and 7 minus 6 is equals to 1. Now क्योंकि राइस को आप किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में. सो यू राइट हियर किलोग्राम. यू राइट यूनिट मैंडेटरी. मीन्स now what is the final answer? 1950 kilogram rice left with shopkeeper. So 1950 kilograms rice left with shopkeeper. Students, hope you understood this chapter very well. Now we have some questions for live doubt session. You solve these questions in your rough notebook. We will discuss these questions in live doubt session. Till then, goodbye students. Have a nice day.